So student should is also used for advice. Okay, you should start preparing for your exams. यहाँ पे कोई किसी को सलाह दे रहा है, advice दे रहा है that person should start preparing for his or her exams. Okay, so should is also used for advice. Okay, the next is will. The next model that we will study about is will. Okay, will is used to show a future action. Okay, okay, तो will जो है ये किसी फ्यूचर एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा उसको डिनोट करने के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, I will visit you tomorrow. Okay, it is a future action. I will visit you tomorrow. When we say tomorrow, it means a future action. Okay, the next is will is used for resolve. We will win this game. That is a promise. Okay, so this is a resolve. This is a determination. ये एक संकल्प है कि हम ये गेम जीतेंगे ही जीतेंगे. And the person is promising also. We will win this game. Okay, it is a resolve. ये एक संकल्प है. Okay, so will is used for future action and resolve. The next modal verb is would. Okay, तो would किस लिए use होता है? Would is used for future action. Okay, which has been happening in the past. Okay, I thought I would be late, so I left early. Okay, this person, whosoever it is, he thinks that he will be late, so he left early. वो जल्दी निकला क्योंकि उसे लगा कि वो लेट हो जाएगा. Okay, this हो जाएगा is a future action, and वो जल्दी निकला, this is a past. This has happened in the past. Okay, so you understanding that would is used for a future action that has started in the past. Okay, the next is hypothesis. Would जो है किसी hypothesis के लिए भी use होता है. Hypothesis means it is not the exact solution of a problem, but it is it is thought to be a solution of the problem. कोई ऐसी we can say prediction की इस चीज को करने से ये सही होगा. Something will be right if it is done that way, or it is just, you can say, a prediction. Okay, hypothesis. I would give you money if I had any means ये बता रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता. If I had any means if I had any money, I would have given you. So would is used for hypothesis. Okay, the person does not have any money, but he says that if I had any money, he is predicting that if अगर मेरे पास होता पैसा तो मैं दे देता. Okay, so would is used for hypothesis here. The next is a polite request. A request which is done in a more polite form. Okay, requests are always polite, but when would is used, it is in a more polite form. Okay, would you please tell me the time? It is, I am requesting someone, and when I have added please and would together, it means it is it is in the very polite form. Okay, would you please tell me the time means it would be very great of you if you tell me the time. Okay, so here would is used as a polite request. So we saw that would is used for a future action that has started in the past, for a hypothesis, and for polite requests. Okay, the next is may. Okay, so may जो है it is used for possibility. Possibility के लिए यूज होता है, किसी चीज की संभावना दर्शाने के लिए यूज होता है may. It may rain tomorrow. It is a possibility. Okay, यहाँ पे tomorrow की जगह today भी कर सकते हैं, in the afternoon, in the evening, at night भी कर सकते हैं. Okay, but when I say it may rain tomorrow, it shows that it is a possibility. इस चीज की संभावना है कि कल बारिश हो. Okay, the next is formal permission. फॉर्मल परमिशन मतलब क्या होता है? किसी चीज की परमिशन लेना इन अ फॉर्मल वे. ओके, मे आई लीव द रूम नाउ. Okay, so the person is asking that if he could leave the room now. So for example, in the class also, when you need to drink water, you ask your teacher, ma'am, may I drink water? Okay, so that is a formal permission that you are asking from your teacher. Okay, so आप जो है अपनी टीचर से अनुमति लेते हो, परमिशन लेते हो कि क्या मैं पानी पी लूँ. ओके, सो दैट
is a formal permission. May is used for formal permission. Now the next modal verb that we will study is might. Okay, so might is used to express possibility. ठीक है, किसी चीज की possibility show करने के लिए हम might use करते हैं. For example, he said it might rain the next day. He said it might rain the next day. इसका मतलब इस चीज की possibility है, इस चीज की संभावना है कि अगले दिन बारिश हो. Okay, so here it is used in the sense of, might is used in the sense of possibility, संभावना. Okay, the next is might is used for suggestion. Might I recommend the Hilton, an excellent hotel? So somebody is talking to someone and he says that might I recommend the Hilton, मैं recommend करूँगा कि आप Hilton में जाएं because it is an excellent hotel. Okay, so it is a suggestion. Somebody is suggesting someone, किसी को सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि you could I recommend that you stay in the Hilton or you go to the Hilton because it is an excellent hotel. Here might is used for suggestion. Okay, the next is speculation. What does speculation mean? Speculation means कि हम किसी चीज के बारे में बता रहे without any firm evidence, without any firm proof about anything. Okay, मतलब कोई बात जिसकी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, we are just telling it that ऐसा हो सकता है. Okay, so might is used for speculation also. He might go to America next week. वो अगले वीक अमेरिका जा सकता है. Now we do not have any proof that he will go to America. We do not have any firm evidence, any कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि वो जाएगा ही, बट ही माइट जा सकता है. ओके, दैट इज स्पेक्यूलेशन. सो माइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पेक्यूलेशन. द नेक्स्ट मॉडल वर्ब दैट वी विल स्टडी इज मस्ट. ओके, मस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी. ओके, मतलब किसी ज़रूरत की बात को बताने के लिए मस्ट यूज होता है. ठीक है, कि ऐसा होना ही होना है. That is strong necessity. And obligation means कर्तव्य. ठीक है, so let us see the sentence example. You must complete this work now. तुम्हें ये work complete कर लेना चाहिए. Okay, this is it has become a necessity. It is obligation. ज़रूरत है कि तुम काम खत्म कर लो. You complete the work. Okay, so here we use must. Then must not. मस्ट नॉट इज यूज फॉर प्रोहिबिशन. जैसे मस्ट हम लोग यूज करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए, वैसे ही मस्ट नॉट हम लोग यूज करते हैं किसी चीज की प्रोहिबिशन के लिए, किसी चीज को मना करने के लिए. यू मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स. तुम्हें एनिमल्स को छेड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, यू मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स. ठीक है, हम एनिमल्स को छेड़ने से निषेध करें, बना करें. ठीक है, सो हियर वी हैव यूज्ड प्रोहिबिशन. द नेक्स्ट इज हैड टू. Had to is a modal verb. Okay, had is the modal verb basically, and to is the complementary that is used with had. Similarly, to is also used with dare, need and ought. Had, dare, need and ought are the modal verbs, and to is used as complementary with these four: had, dare, need and ought. Okay, so had is used for necessity or obligation and it is referred to in the past. Okay, he had to leave his apartment when he couldn't afford to pay the rent. इसका मतलब उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ देना पड़ा जब वो जो रेंट था, जो किराया था, वो अफोर्ड नहीं कर पाया. ठीक है, so he had to leave his apartment when he couldn't afford to pay the rent. So here you can see we have used had to as an obligation. ठीक है, obligation मतलब ऐसे तो obligation मतलब कर्तव्य होता है, या फिर हम obligation मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो उसे उस पॉइंट पे करना पड़ा या करना चाहिए था. ठीक है, so because he couldn't pay the rent, he had to leave the apartment. Okay, so it is an obligation here. Had to is used in the sense of an obligation. Then the next modal verb is dare. Okay, so dare is used for warning someone. Okay, किसी को warn करने के लिए हम dare use करते हैं. Dare anyone go there. क्या किसी की हिम्मत है to go there? Okay, to go to some place. Okay, so here means dare is a warning. No one dare go there means किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की. Okay,
So here also dare is used as a warning to warn someone that the person or persons cannot go to some place, okay, because it is risky or harmful or anything, okay. So dare here is used as a warning. The next is need, okay. Need is the next modal verb. It expresses necessity, ठीक है, किसी चीज की जरूरत को एक्सप्रेस करता है मॉडल वर्ब नीड, ओके. ही नीड ओनली आस्क एंड आई विल टेल हिम, मतलब वो बस पूछेगा, उसे बस पूछने की जरूरत है एंड मैं बता दूंगा या बता दूंगी, ओके. सो नीड हियर मीन्स नेसेसिटी. अगर वो हमसे पूछता है आई विल टेल हिम, वो बस पूछेगा एंड मैं बता दूंगा या बता दूंगी. द नेक्स्ट इज नो वन नीड थिंक दैट देयर जॉब्स आर एट रिस्क. किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जॉब रिस्क पे है या उसका जॉब जा एट रिस्क मीन्स उसका जॉब जा सकता है, ओके. सो हियर इट मीन्स दैट need is used as a necessity, as in the form of the expression, the feeling that the word need gives is necessity, zarurat, okay. The last modal verb that we are going to study is ought to, okay. Ought to, what does ought to mean? Ought means कि किसी टाइम पे जो करने की ज़रूरत है वही काम किया जाए, ओके. यू कैन टेक इट एज अ ड्यूटी, एज नेसेसिटी और अ मॉरल ऑब्लिगेशन, ओके. कोई फोर्सफुल नहीं है कि यही काम करना हो, बट इट इज़ लाइक कि वन शुड बी डूइंग सम वर्क व्हेन वी से ought to, okay. So let us look at the sentence examples. You ought to apologize to your wife, okay. Somebody, a husband has committed some mistake and you ought to apologize to your wife. It means कि dutifully, या तुमने गलती की है, so it is your duty to apologize, means ask for apology या फिर say sorry to your wife, okay. The next is you ought to be more punctual, means तुम्हें और punctual होने की ज़रूरत है. You need to be more punctual, okay. मतलब ये कोई forceful नहीं है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि करना ही पड़ेगा, but at some situations it is the right thing to do, okay. So if a husband and wife had a fight, so the husband, if he is wrong, then he should apologize to his wife. And in the next sentence, if a person is not punctual, is not on time, then उसको ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो टाइम से जाए. उस पर कोई दबाव, कोई फोर्स नहीं है, बट इट इज़ हिज मॉरल ड्यूटी, इट इज़ हिज मॉरल ऑब्लिगेशन कि वो टाइम पे जाए. ही शुड बिकम मोर पंक्चुअल, ओके. This was all about modal verbs, okay. Not all, we will see that modal verbs जो हमने पढ़े हैं, can, could, will, would, shall, should, may, might, जो भी हमने modal verbs पढ़े हैं, we will see कि उनका जब हम negative sentence में या negation में use करते हैं तो वो क्या words बन जाते हैं and उनको short form में या contract करके हम क्या बोलते हैं, okay. I will show you a chart and then you will understand. I hope this table you have understood, okay. So children, as you can see in the chart, in the first column of the chart, the modal verbs are given. In the second sentence, the negation of the modal verbs, कि अगर हम उनको negative sense में use करना होगा तो हम कैसे use करेंगे. And the third column shows the contraction of the negation, okay. कि अगर in negations को अगर हमें short करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, okay. So the first modal verb is can. Its negation is cannot, and जब हम इसको contract करके लिखेंगे so it will be can't, okay. Cannot can also be written as can't, okay. For example, she cannot dance, okay. If we contract it and write, we can write it as she can't dance, okay. The next is could. Could का negation होगा could not, and जब हम इसको contract करके लिखेंगे then we can write couldn't. Similarly, shall का negation है shall not, and shall not का contraction है shan't, okay. For example, I shall not go to the party tonight. I shall not go to the party tonight. अब इस sentence में हम shall not की जगह shan't भी लिख सकते हैं. For example, I shan't go to the party tonight, okay. Then should का negation है should not, and should not का contraction है shouldn't. Then the next modal verb is will का negation है will not, and will not का contraction है won't. The next modal verb is would
would का negation है would not, and would not का contraction है wouldn't. The next modal verb is may का negation होता है may not, and may not का कोई contraction नहीं होता है, ठीक है, mayn't या ऐसे कुछ हम लोग नहीं लिखते हैं, may not का हमेशा may not ही रहता है. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे का ही might, मे से ही might वर्ड बनता है might का निगेशन होता है might not, एंड might not का भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हमें might not पूरा लिखना होता है. ओके, द नेक्स्ट इज मस्ट का निगेशन होता है must not, एंड उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है mustn't. ओके, मस्ट n अपॉस्ट्रोफी t. ओके, सो मस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है mustn't, एंड नेक्स्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है डेयर का कॉन्ट्रैक्शन होता है डेयर नॉट, एंड इसका डेयर का निगेशन होता है डेयर नॉट, एंड इसका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, हमें डेयर नॉट पूरा लिखना होता है. ओके, द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज नीड का कॉन्ट्रैक्शन होता है नीड नॉट, एंड नीड का निगेशन होता है नीड नॉट, एंड नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है नीडेंट. ओके, देन द लास्ट मॉडल वर्ब इज ought to, उसका निगेशन होता है ought not to, एंड निगेशन का कॉन्ट्रैक्शन होता है oughtn't to. ओके, तो इसमें ought not to का बन जाता है oughtn't to. ओके, आप लोग हर कॉन्ट्रैक्शन में देख सकते हो कि n के बाद अपॉस्ट्रोफ फिर t. ओके, सो कैन नॉट का can't, could not का couldn't, shall not का shan't, should not का shouldn't, will not का won't, would not का wouldn't, may not का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, might not का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, must not का mustn't, dare not का नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन, need not का needn't, and ought not to का oughtn't. ओके, ठीक है, oughtn't. ओके, so we have seen about modals, their uses, what do they express, their example sentences, and negated modal verbs and their contraction. Okay, so now I will send you the PDF of the exercises and the copy work. Okay students, I hope this video is clear. I hope you all have understood. If you have not understood anything in the video, then you can put it down in the comment section. I'll try to solve your problem. Okay, thank you students, have a good day.